Hello students, in the previous video we have completed the reading portion of Fisherman and his wife. In today's video we will discuss the question answers of discovery. Okay, but this time I am slightly changing the pattern of discussing question answer. Let us discuss the question in the form of comprehension. What is comprehension? In comprehension, you have given a stanza like the stanzas given in your book, and what you have to do, there are certain questions and you have to search out where the answer will be. So this is your comprehension. Okay, now the question answers given in your book, I am discussing these question answers from the stanza. Okay, so in this way you will understand how to comprehend the question answers. Okay, in this first question is, where did the fisherman and his wife live? So as we read the chapter, tell me, where did the fisherman and his wife live? So in the first line it is given that fisherman and his wife lived in a filthy shack, okay, near the sea. So like this we can comprehend the question answers from the paragraph itself. So your first answer is, the fisherman and his wife lived in a filthy shack near the sea. Okay. Second question is, what fish did the fisherman catch one day? Second question, what fish did the fisherman catch one day? So this is the fish. You know the name of the fish? Yes. But we don't know where the answer is written. So just go through the paragraph, read it, and you can find out that the fisherman had caught a large flounder. Okay? The fisherman had caught a large flounder. So you can write answer like this. One day the fisherman had caught a large flounder. क्योंकि जो पैराग्राफ है वो आपका स्टोरी पे बेस है, तो जब हम आंसर फॉर्मेशन करेंगे तो वो हम क्वेश्चन से लेंगे कि क्वेश्चन में क्या लाइन स्टार्ट करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर फ्रेम करते हैं. तो जैसे इसमें आंसर क्या बनेगा कि एक दिन की बात हो रही है तो हम आंसर क्या लिखेंगे, वन डे द फिशरमैन हैड कॉट अ लार्ज फ्लॉन्डर. ओके, सो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन आंसर. आफ्टर दिस थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड ही डू विद द फिश दैट ही कॉट एंड व्हाई? तो आपको याद होगा स्टोरी में कि फिशरमैन ने क्या किया था फिश के साथ और उसने ऐसा क्यों किया था. सो वेयर वी गेट दिस आंसर? So the fisherman certainly let a fish swim away who knows how to talk. तो क्यों क्या किया था फिशरमैन ने कि उस फिश को जाने दिया था जिसको बातें करनी आती थी. मतलब फिशरमैन को फिश पे यकीन था कि हाँ वो सच में एक राजकुमार है जिसको श्राप दिया गया है, जिसपे जादू मंत्र हुआ है. ठीक है. सो योर आंसर इज, द फिशरमैन लेट द फिश स्विम अवे इनटू द सी बिकॉज द फ्लॉन्डर वाज एन एन्चेंटेड प्रिंस. क्यों उसको जाने दिया था? क्योंकि वो एक क्या था, एन्चेंटेड प्रिंस था. ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बिकॉज ही वॉज एन एन्चेंटेड प्रिंस. सो माई मेन फोकस इन दिस वीडियो इज टू टीच यू हाउ वी कैन कॉम्प्रीहेंस द क्वेश्चन आंसर. कि इसका मतलब ये आपको टेंशन नहीं लेनी कि है मैम ने इतनी जल्दी जल्दी से बता दिया, हम लिखेंगे ये कैसे लिखेंगे. जस्ट गो थ्रू द वे ऑफ कॉम्प्रीहेंशन कि हमने स्टोरी रीड की हुई है. स्टोरी रीड करने के बाद में जो आपको क्वेश्चन देते हैं उसको हम पैराग्राफ में कैसे सर्च कर सकते हैं, मैं आपको वो बता रही हूँ. ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द फिशरमैन्स वाइफ से व्हेन शी हर्ड अबाउट दिस? तो जब घर जाके फिशरमैन ने अपनी वाइफ को बताया सब कुछ, तो उसकी वाइफ ने क्या कहा था? यस, as the wife was greedy, so she said that what you ask from the flounder. क्या पूछा कि तुमने उसको जिंदा रहने के लिए, ठीक है, उससे आपने क्या मांगा कि आपने उसकी जान छोड़ दी, इसके बदले में आपने उससे क्या मांगा? तो उसकी वाइफ ने उनसे ये कहा था. सो आंसर इज, द फिशरमैन
wife heard about the flounder, she asked her husband what he asked from it to let it swim back into the sea. कि वापस से स्विम करने के लिए, वापस से सी के अंदर जाने के लिए उसने उससे क्या मांगा. ओके, सम क्वेश्चन लाइक दिस क्वेश्चन आंसर यू कुड नॉट फाइंड इन द गिवन पैराग्राफ एज इट इज. आपको ये जो आंसर मैंने बताया वो आपको एज इट इज लाइन नहीं मिलेगी. So in comprehension type question answer, certain questions you can find in the paragraph itself, but sometimes some questions are there which we have to write on our own. Okay, like the one I discussed right now. After this, what was the fisherman's wife first wish and why? So what demand the fisherman's wife made? She want to grant a wish, and what was that wish? She asked her husband to ask for a little cottage. ठीक है, क्योंकि वो फिल्दी शेक में रहते थे तो वो अपने हस्बैंड को कहती कि आप उससे क्या विश मांगो, एक छोटे से कॉटेज की. सो योर आंसर इज द फिशरमैन्स वाइफ फर्स्ट विश वाज to have a cottage for them because they used to live in stinking filthy shack. Okay, after this our next question will be, how did the fisherman feel upon hearing his wife's final wish? Why? तो हमने रीड किया था कि उसकी वाइफ ने बहुत सारी विशेस की थी, है ना, लेकिन जब फाइनल विश की तो फिशरमैन हैरान क्यों हो गया एकदम से. तो ऐसा उसने क्या मांग लिया था? So her husband got to started after hearing her wife's final wish, or we can say last wish, that he fell out of his bed. He thought that he must have heard wrong, so he asked his wife to repeat her wish again. Where you can find this answer? Here. Her husband got to startled after hearing her wife's last wish, that he fell out of his bed. He thought that he must have heard wrong, so he asked his wife to repeat her wish. कि उसको अपनी वाइफ की विश पे यकीन ही नहीं हुआ, वो एकदम हैरान हो गया और उसने उससे वापस पूछा कि मुझे बताओगी तुम लास्ट विश तुम्हारी क्या है, तुम क्या चाहती हो. आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड द फ्लॉन्डर फुलफिल ऑल हर विशेस? क्या फ्लॉन्डर ने सारी विशेस उसकी पूरी की थी? यस. No, the flounder didn't fulfill fisherman's wife last wish. Okay, when the fisherman told the flounder his wife last wish, the flounder got so angry that he took all the wishes that he had granted back. जब उन्होंने लास्ट विश सुनी तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने उनकी सारी विशेस वापस ले ली. So here we can find the fisherman went back to the flounder. Okay, and here what the flounder did? Flounder take away all the wishes. Okay, in this your last question is, list all the wishes which the fisherman's wife made. तो हमें ये बताना है कि फिशरमैन की वाइफ ने कौन कौन सी विशेस ग्रांट करवाई थी. ओके, सो द वाइफ्स फर्स्ट विश वाज अ कॉटेज विद अ ब्यूटीफुल यार्ड एंड गार्डन अटैच्ड टू इट. ओके, and her second wish was that she wanted a stone palace for herself. After that third wish, her next wish, third one, was that she wanted to become the king. Okay, and the fourth one and her last wish was that she wanted to become God. So hope you can understand how we can comprehend the question answer. Okay, now you can complete your work by writing from here. Okay, so today's work is to write question and answer of chapter number 3, discovery. These are the same answer which I have discussed right now in the comprehension form. Okay, so your work is to complete it in your book. All the answers are given here from A to H. Complete your book work. The question answers given in your discovery book. Thank you and complete your work timely. Okay, bye.